Hello everyone and welcome back to my channel. So we'll be starting with part 2 on differentiation. If you have not watched part 1, please do watch it because I have covered all the concepts, formulas and the basics of differentiation. I've covered each and everything. I'll also attach the playlist in my description box so that you can watch all the videos of this chapter. Some students are not able to solve the questions on chain rule, so I'll teach you again. And then we will do logarithmic and exponential functions. First the formulas and then we'll move on to the questions, okay? And you can also purchase my ISC 12th Topper Notes. It has all the formulas covered, Topper Notes, practice questions with solutions, and the most expected question bank at the end. So I'll just show you the pages. So these are my notes. Okay. So all chapters are covered and it is the full syllabus along with the questions. I'll be pasting the link of this in my description box. Okay, so we'll start with this question. Now this is your outer function and this is your inner function, okay? सबसे पहला हमारा रूल होता है हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. सो दिस विल बी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, राइट. अब देखो अगर ये वाला पार्ट है, अगर ये एक्स होता, ठीक है, तो आपको आगे डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता, बट हेयर इट इज साइन एक्स स्क्वायर. विल हैव टू डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर, राइट. सो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर. नाउ सी, ये तो कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया, राइट, बट ये जो है ये तो एक्स नहीं है ना, दिस इज एक्स स्क्वायर, यानी इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं. ये भी एक इनर फंक्शन है, सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ऑल राइट, सो दिस विल बी माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर इंटू cos x square into 2x. You'll be able to master this concept on chain rule after you solve a lot of questions. So I recommend you to please go through the PYQs, solve them. Let's start with this. You have to prove that dy by dx is equal to 2 cosec x. Okay. Before that, I want to just simplify this complicated equation. अब यहाँ देखो, आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाएगा ये, है ना. सो इट्स बेटर टू सिंप्लीफाई इट फर्स्ट. इसमें हम क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें कि मैंने सारे 11th के कॉन्सेप्ट्स कराए इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी 12th में यूज़फुल है, ठीक है, उसको आप प्लीज़ देख लो. आई हैव कवर्ड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स ऑल्सो. जितने भी फॉर्मूलेज आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट आएंगे, ठीक है, तो उसको एक बार आप प्लीज़ देख लो. नाउ सी, y इज इक्वल टू हाफ लॉग. नाउ जस्ट टेल मी 1 माइनस कॉस 2x. This is equal to 2 sin square x and 1 plus cos 2x, it is equal to 2 cos square x. 2 से 2 cancel, right? Half log, this is tan square x. Now just tell me, can I write this like half log tan x whole to the power 2? Yes, this is correct. अब log की एक प्रॉपर्टी होती है m log n, ठीक है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log n to the power m. याद है 9th में पढ़ रखा होगा, ये जो m है इसके पावर में होता है, राइट. सो यहाँ पर भी मैं सेम करूँगी, हाफ log, सी दिस इज log tan x whole to the power 2 into 1 by 2. I'll take this here, 2 and 2 gets cancelled, we'll be left with log tan x. Now this is y equal to log tan x. See how it is simplified. Now we'll differentiate it with respect to x. So dy by dx is equal to, now here this is the outer function and this is the inner function, right? सो फर्स्ट विल सॉल्व द आउटर फंक्शन. अब जब भी आपको समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करना है, इसको आप एफ एक्स मान लो, है ना. नाउ टेल मी लॉग एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा. दिस विल बी 1 बाई एफ एक्स, दैट इज 1 बाई टैन एक्स, राइट, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द इनर फंक्शन, दैट इज टैन एक्स. सो दिस विल बी 1 बाई टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स.
Just look at the proving part. We have to prove that it is equal to 2 cosec x. See, I want cosec x. So can we simplify it here? So this will be 1 by tan x is cos x by sin x, right? Into 1 by cos square x. So cos and cos gets cancelled. ये तो 1 by sin x cos x है. Cos x. If I multiply and divide it by 2, I'll get 2 upon 2 sin x cos x, right? Now 2 sin x cos x is equal to sin 2x. 2 upon sin 2x. So this is 2 cosec 2x. This is your answer, hence proved. यहाँ पर ये 2 होना चाहिए था, okay? Now we'll start with differentiation of logarithmic and exponential functions. Before that, we'll just have a look at these formulas. These are your 9th class formulas, okay? So यहाँ देखो, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, सो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएंगे एक्सपैंड. अगर ये डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर देखो डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये माइनस में जाएंगे, ठीक है? इनको आप खुद लर्न कर सकते हो. log a base a, it is equal to 1 and log 1 base a, it is equal to 0. ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन लॉग का. जब भी आपका बेस e होगा तब आपका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आएगा, ठीक है? बट अगर आपका बेस a है, ये e नहीं है, सो आपका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स लॉग a आएगा विद बेस e. तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें अलग अलग डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये याद रखना. log of log x. Now this is your outer function, okay? Differentiation of this. So I'll write 1 upon log of log x, okay, into d by dx of, this is the inner function, log of log x, okay? Simple. Now d by dx of log x. Here it is the outer function and this is the inner function. So this will be 1 upon log x into d by dx of log x, right? So this will be 1 upon log of log x into 1 upon log x into 1 by x. So this is your final answer. Now you have to check the proving part. Here we don't want any term of y. So we'll arrange the terms accordingly. Here we can write it y log x plus y equal to x. I'll take y common. This becomes log x plus 1 equal to x. Okay. The only reason we have done this is because we don't want any y term on the right hand side. We can write y equal to x divided by 1 plus log x. We'll apply quotient rule here. Okay. So this will be dy by dx equal to, I'll write the denominator first, d by dx of the numerator, that is 1, minus numerator and differentiation of the denominator, that will be 0 plus 1 by x. I'll write it directly, divided by 1 plus log x whole square. So we'll get 1 plus log x minus 1 divided by 1 plus log x whole square. 1 and 1 gets cancelled. We are left with this and it's proved. Now I want you all to try this question. It is again chain rule. Don't miss any step. This is your outer function and this is your inner function. So this will be minus sine log x whole square into d by dx of the inner function, right? We'll get minus sine log x whole square into d by dx of log x whole square will be 2 log x into d by dx of log x,
right? So when we differentiate this part, it will be 1 by x. I can write it 1 by x. So this is your answer. Okay, d by dx of this. Now see how to solve this. Differentiation of this function is 2 into log of log x, right, into d by dx of log x. So this will be 2 into log of log x into, now d by dx of this is log of log x. Okay, so this will be 1 by log x into d by dx of this inner function. So I can directly write 1 by x. Now differentiation of e to the power x and a to the power x. We're going to do the exponential functions. d by dx of e to the power x will always be equal to e to the power x. And d by dx of a to the power x will be a to the power x log a base is e. Now let's solve some questions. Differentiation of 10 to the power log sin x. I know it's a little difficult for you, but you can just try it. I'll explain you. Now see, this is a to the power fx, right? We know that differentiation of a to the power x is a to the power x log a with base e. This will be 10 to the power log sin x log 10 into d by dx of log sin x. Okay, see, this was a, right, and this is fx. You'll have to differentiate the inner function also. So 10 to the power log sin x into log 10. Now d by dx of log sin x. This will be 1 by sin x into d by dx of sin x. That is equal to cos x. So this will be, you can write it equal to cot x into 10 to the power log sin x log 10. Next question. Differentiation of e to the power x divided by 1 plus sin x. Now this is the numerator and this is the denominator. We'll be applying quotient rule here. So first we'll write the denominator, then differentiation of the numerator, minus numerator and then differentiation of the denominator, d by dx of 1 plus sin x divided by 1 plus sin x whole square. Okay, so this will be 1 plus sin x into e to the power x minus e to the power x into d by dx of 1 plus sin x will be 0 plus cos x divided by 1 plus sin x whole square. So e to the power x 1 plus sin x minus e to the power x cos x. This is your answer. If you can simplify it further, you can do that. Otherwise, your answer is correct. Okay, so we have done this formula. D by dx of log base ax is equal to 1 upon x log a base e, right? यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका जो ये बेस है इट इज़ नॉट e, यहाँ पर ये a है, सो वी डिफ्रेंशिएट इट दिस वे. ठीक है, 1 डिवाइड बाई एक्स लॉग a बेस e आएगा. ओके, अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर कंपेयर करो आप. ठीक है, ये जो ये वाला पार्ट है ये पूरा यही है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूँगी, 1 अपॉन लॉग एक्स विद बेस 7, 1 अपॉन लॉग एक्स विद बेस 7. यहाँ तो यही करा है ना, इस वाले को यहाँ पर 1 अपॉन एक्स लिख दिया है. मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, लॉग ए बेस ई 1 अपॉन, देखो ये वाला पार्ट करना है हमें, ध्यान से देखो, इसको कंपेयर करो तभी समझ में आएगा. 1 अपॉन लॉग लिख दिया, बेस में ई है, और
जो भी ये पार्ट है, यहाँ पर कौन सा है, ये पार्ट है 7, है ना, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये फिर से डिफ्रेंशिएट होगा log 7 ये वाला, log x बेस 7। सो इतना आपको समझ में आ गया। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कैसे होगा, इसी फॉर्मूला से ना। सो दिस विल बी 1/, ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन नहीं आते हैं वैसे पेपर में, एग्जाम में नहीं आते, स्टिल आप एक बार कर लो, आजकल कोई भरोसा नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो दिस विल बी 1/, इसमें मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ सॉल्व करते वक्त। सो देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे फिर से, 1/7 1/x log बेस में e आएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ आपका आ गया है अपॉन log। सो यही आपका आंसर है। कई लोग इसको क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं, ये 2 बार है ना, तो 1/, पहले तो 1/log 7 है, ये जो भी है, इंटू x log 7 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख देते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, यानी पार्ट 3 में हम क्या कवर करेंगे, एक तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम ITF का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड पैरामेट्रिक फंक्शंस भी हम कवर करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं इसको 4th पार्ट में कर दूंगी, but I'll try to cover both these topics in part 3. So you can subscribe my channel and I hope you like the session. Okay, bye.